गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी चैनल रे। तो आज आम देखा B.Sc फोर्थ सेमिस्टर कोर पेपर 9 जोटा हूँ फिजियोलॉजी लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। तो ये आज आम प्रथम जोटा यूनिट अच्छे आमर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यहाँ आम लास्ट टॉपिक आम देखुचु जोटा हूँ रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। तो बेसिकली देख कौन देखे आम देखा तो जोटा हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन 3 टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू केमिकल एंड मेकानिकल चेंजेस विद इन द सिस्टम। तो कौन कौन केमो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर और मेकानो रिसेप्टर जोटा कि आम कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ी सारीचे है। तो केमो रिसेप्टर कौन रेस्पॉन्स टू वेरियस केमिकल कंपोनेंट विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन। फॉर एग्जांपल होची ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। केमो रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाय excessive amount of hydrogen ion secreted by the stomach। तो अधिक मात्रा हाइड्रोजन आयन जो सिक्रिशन होता है स्टोमाक रु हाइड्रोक्लोरिक जदि कला ताले कौन होता है से केमो रिसेप्टर को रेस्पॉन्स करिथाय हैला। सेमति ऑस्मो रिसेप्टर जदि पढ़िबा आर सेंसिटिव टू द osmolarity of the content within the lumen as the digestive process of the progresses है। Large nutrient molecule are split into their small component है component है। This increase the number of molecule and therefore the osmolarity of the material being कौन process है। Excessive osmolarity may suggest that absorption is not keeping space in the digestion है। तो देखो मेकानो रिसेप्टर कौन आर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस और जोटा डिस्टेंशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाल जोटा कि आमर कंट्राक्शन बा स्ट्रेस को ऊपर बा एक्सपांशन को से मेकानो रिसेप्टर रे आमे जानिबा जोटा कि आमे ऑलरेडी तीनटा जाक मु भलो भाबरे तुमको कंपैरेटिव एनाटॉमी रे बुझेई सारिची हैला। Receptor stimulation may lead to activation of any or all the following regulatory mechanism जोटा जी intrinsic nerve plexuses, extrinsic autonomic nerve, तापर gastrointestinal hormone, तापर आ कोन जिला तुम देखो ताल फास्ट देखबा में intrinsic nerve plexus कोन हम जानिबा हैला। तो देखो the intrinsic nerve plexus are interconnecting network of the nerve cell located entirely within the gastrointestinal tract है and are responsible for intra-tract reflexes है। The stimulation of the receptor in one region of the tract neutrally influence activity of another region of the tract। तो जेहेतु यही जगह टोटाल सबुआड़े नर्वटा खेल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रे अच्छी तेणु गोटे जगार जब किसी स्टिमुलेट है सेटा अलग जगार मध्य तार प्रभावटा पड़ी था। दिज रिफ्लेक्स अकर्स डायरेक्टली है इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डायरेक्ट ये कौन था CNS उपरे ये प्रभाव पकई था है। इंट्रा ट्रैक्ट रिफ्लेक्स provide a mechanism for self-regulation for the tract and the help the coordinate of the activity of the organ within it है। An example of such reflex is the enterogastrin reflex है जो जगह कौन है in which receptor stimulation in the duodenum of the small intestine elicit neural activity that regulate muscle contraction and glandular secretion in the stomach है। तापर एक्सटेंसिव ऑटोनॉमिक नर्व कौन देख गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी इज आल्सो मॉडिफाइड बाय द एक्सटेंसिव ऑटोनॉमिक नर्व। द ट्रैक्ट इज इनर्वेट बाय द sympathetic and parasympathetic division of the autonomic nervous system ANS है। The effect of these two division tend to oppose each other. The parasympathetic system stimulate most digestive activity
बेसिकली जेती भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी अच्छी ताको से सिंथेसाइज करे व्हाइल द सिंपैथिक सिस्टम इनहिबिट देम है तो ये कौन इनहिबिट करे बा कमे दिए ताको है तो जड़े बढ़ेले जड़े कमे देव है तो देखो इंटरेस्टिंगली द ऑटोनॉमिक nerve to the digestive system, especially the vagus nerve of the parasympathetic system, can be discretely activate है in this way digestive activity can be modified without कौन affecting tissue function of the other region of the body. तो जगह देखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किसी हार्मोन देखा ए थर्ड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ए रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन द इज द सिक्रीशन ऑफ द कौन जीआई हार्मोन है दीज हार्मोन मे बी रिलीज इन वन रीजन ऑफ द ट्रैक्ट ट्रैवल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम टू अदर रीजन ऑफ द ट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ इफेक्टर सेल इन दैट रीजन है these are 5 main hormone है that aid the regulation of the digestive system in the mammal है these are variation across the vertebrates such as birds so arrangement are complex and additional detail and regulatory discover है for instance more connection to metabolic control largely the glucose insulin system have been uncover in the recent year है जमती कि आम प्रथम गोटे हार्मोन देखा गैस्ट्रिन है तो देख प्रथम है आम गैस्ट्रिन विषय जाना तो गैस्ट्रिन इज इन द स्टोमच एंड द स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट द पेप्सिनोजेन है तो बेसिकली कौन है पेप्सिनोजेन अच्छी an inactivated form of the enzyme pepsin है एंड कौन आउ गोटे हूँ कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो दीटा आम जानले द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन इज स्टिमुलेट कौन बाय द फूड एराइविंग द स्टोमक द सिक्रीशन इनहिबिट बाय लो पीएच है लो पीएच द्वारा से इनहिबिट करता है सिक्रीशन को सेमती कोलेकाइस्टोकाइनिन जो देख CCK ताले एटा होची कोन ड्यूडेनम रहते इन द ड्यूडेनम स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द एम्प्टिंग ऑफ बाइल इन द गॉल ब्लडर तो यार काम कौन है यार काम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छी पैनक्रियाज जोटा स्टिमुलेट होता है ताको से स्टिमुलेट करे एवं एम्प्टी करता कौन एम्प्टी करता है बाइल को से एम्प्टी करता है कोठी जोटा जोटा आमर स्टोर होकर रही है गॉल ब्लाडर रे है दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन इज रेस्पॉन्स टू द फैट इन काइम तापर देखो आम देखा सिक्रेटिन तो सिक्रेटिन देखो सिक्रेटिन इज इन द ड्यूडेनम एंड सिग्नल the secretion of the sodium bicarbonate in the pancreas and stimulate the secretion of the bile in the liver. This hormone responds to the acidity of the chyme. तब the ghrelin देखबा तो ग्रेलिन होची हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द स्टोमक है स्टोमक रो सिक्रेट होता है एंड टारगेट द पिट्यूटरी ग्लैंड है सिग्नलिंग टू द बॉडी दैट इज नीड टू ईट है ये कौन था बॉडी को सिग्नाल देता है खाद्य खाइबापाई जोड़ा अच्छी देख जब हम देखा पेप्टाइड देखा इज द हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन टू काउंटर ग्रेलिन है ग्रेलिन को किए काउंटर करता है पेप्टाइड है इट इज रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस एंड सिग्नल दैट यू हैव जस्ट इटेन एंड हेल्प सप्रेस आवर एपिटाइट तो ये कौन करे ये होता है आमर हाइपोथैलेमस सिक्रेशन होता है आमको निर्देश दिए जे ग्रेलिन एगेन्स्ट ग्रेलिन कौन आमको खाद्य खाइबापी अधिक इंटरेस्ट माने इच्छा कराए अर्थात आमको भोक कराए किंतु पेप्टाइड कौन करे सांगे सांगे ग्रेलिन को चेक करे जे आमे वर्तमान खाद्य खाइचु आउ खाइबा नहीं है तो pancreas releases the hormone insulin that target the hypothalamus and also aid in suppression. तापर मोटिलिन कौन देखा तो मोटिलिन होची मोटिलिन इज इन द ड्यूडेनम है ड्यूडेनम होची एंड इंक्रीज द migrating myoelectrin complex compartment
of gastrointestinal motility and stimulate the production of the pepsin. तो पेप्सिन ऑफ स्टिमुलेट प्रोडक्शन को से ये करता है, स्टिमुलेट करता है। तापर देखो GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इज द in the duodenum and decrease the stomach churning in the order of the slow emptying of the stomach. Another function is to induce insulin secretion. तो देखो एपिटाइट रेगुलेटरी हार्मोन कौन हम जानिबा regulating hormone. These are hormones secreted by the tissue and organ in the body that is transported through the bloodstream to the satiety center है a region in the brain that trigger the pulse that give us feeling of hunger जे कि हमको खाद्य खाइबा पाई बा हमको भोक होला बोले हमको फील कराए और aid in the suppressing our appetite है। तो ये जगह देखो किछिटा जो आमे जो हार्मोन गुड़ाक पढ़िले ता विषय समराइज करके दे दीची एको मध्य तमे पढ़ी देले आहुरी इजिली क्लियरली बुझीजिवो। जो देखो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन होची स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रिशन एंड प्रोलिफेरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम तार पोजीशन को जा रही प्रेजेंट इन पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड इन द गैस्ट्रिक ल्यूमेन है। तो ये जो छटा एक अच्छी ये छटा को तुम निजे नोट करके पढ़ी दे पार है, को समाराइज करके दे दीची। तो यहाँ सहित आमर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुआ चैप्टर पढ़िबा। थैंक यू।